Assalamualaikum dear students. As you know, I am Memuna Suriho, lecturer zoology, Government Girls Degree College Tadu. Today my topic is class spices from zoology, biology chapter number 10 from first year and BSc part 2. Today my topic is spices. The word spices means fishes. There are two types of fishes, bony fishes and cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes means soft bodied fishes. उहे मच्छूं जिन जे अंदर हॾो न हूंदो आहे, माना कंडा न हूंदा आहिनि, उन्हनि खे असां cartilaginous fishes चवंदा आहियूं. उन the study of fish is called ichthyology. Ichthyology means study of fishes. मच्छियुनि जी स्टडीअ खे या मच्छियुनि जी साइंस खे ichthyology चइबो आहे. There are two types of fishes, as I have told you, bony fishes and cartilaginous fishes. Cartilaginous fishes are called chondrichthysis and the bony fishes are called osteoichthysis. Here I have given you which example. I am giving you the example. This is a bony fish. Bony fish means a fish, a routine fish. Domestic fish we are using at our home for eating purpose. Most of the Sindhi person use these type of bony fishes. हिन जे अंदर हे मच्छी आहे, हिन जे अंदर ही vertebral column आहे, ही हॾो आहे. This is vertebral column. This is a vertebral column. Consists of vertebrae. This is vertebral column. This is a type of endoskeleton. Endoskeleton means a skeleton which is embedded with the muscles. वो हॾनि जो पिंजरो जेको बॉडीअ जे अंदर हुजे, ही chordata. फिश जेका है उन जो it belongs to chordata family. ही chordates सां belong थी करे. हिन जे अंदर it is a bilateral symmetrical animal. ही उहो एनिमल आहे जंहिंजी bilateral symmetry हुजे. हीअ हिकु मच्छी कटियल मच्छी आहे. हिन जा तव्हां ॾिसंदव त हिन जा ॿ हिसा जेके आहिनि उहे एग्ज़ैक्टली बिल्कुलु हिकु जहिड़ा आहिनि. हिन जो हिकिड़ो साइड ॿिए साइड सां बिल्कुलु मैच कंदो. हे ॾिसो, हे हिन जो ही पासो, हिन जो ही साइड, हिन जो ही साइड ऐं ही साइड. को बि एनिमल जंहिंखे असां हिन तरीक़े सां ॿिनि हिसनि में कटे सघूं, जो हिन जो ही पासो ऐं ही पासो एग्ज़ैक्ट हिकु जहिड़ा हुजनि, त इन खे असां bilateral symmetrical चवंदा आहियूं. इन खे छा चवंदासीं? bilateral symmetrical. This is an example of bilateral symmetrical animal. An animal which can be cut into two equal halves is called bilateral symmetrical. Now I am taking one piece from this dish. This is class spices. Spices means fishes. Spices are cold-blooded animal. These are cold-blooded animal. Cold-blooded animal are those animals which cannot control their body temperature. Their body temperature changes with the change of environment. जेकॾहिं तव्हां हिनखे थधि में रखंदव, थधे पाणीअ में बर्फ़ में, त हिननि जो बॉडी ते कंट्रोल न हूंदो आहे. हिननि जूं वेन्स जेके आहिनि उहे क्रिस्टल बणिजी वञनि. ऐं जेकॾहिं हिननि खे गर्मीअ में रखिबो त ही लिक्विड बणिजी हिननि जी जेल वांगुरु बॉडी निकिरी वेंदी आहे. पोइ अल्लाह ताला हिननि खे रखंदो अहिड़े हुननि में एटमॉस्फेयर में रखंदो आहे जीअं हिननि जे बॉडी जो डैमेज न थिए. I have told you different characteristics of the class spices. This is the topic from BSc part 2 and also from the first year chapter number 10. Kingdom Animalia. Class spices belongs to the phylum Chordata. Chordata is the largest phylum of zoology. Now I am telling you about the general characteristics of fishes. Fishes are chordates. They contain endoskeleton. They contain scales on their body. These are scales. ये जो छिलर है हिनखे असां scales चवंदा आहियूं. Mostly bony fishes contain two types of scale, cycloid scales and ctenoid scale. Cycloid and ctenoid scales. There are total types of scales which are found in the fishes. Number one is placoid scale. Placoid scales are those scales which found in the shark or ray fish. उहे मच्छूं जेके जिन में हॾो मौजूदु न हूंदो आहे, समुंड जूं मच्छूं, उन्हनि जे अंदरि उन्हनि जा स्केल्स हीअं हिक ॿिए खां
अलॻि अलॻि कोन थींदा आहिनि, उहे स्किन जे अंदरि ई जुड़ियल हूंदा आहिनि, जीअं किरड़ीअ जे अंदरि हूंदा आहिनि, लिज़र्ड जे अंदरि। हिन मां पंहिंजे हिन वीडियो सां गॾु हिकु ॿियो वीडियो शेयर कयो आहे जंहिंमें टाइप्स ऑफ स्केल्स मां ॾेखारिया आहिनि तव्हांखे, तव्हां हिकु दफ़ो हुनखे व्यू ज़रूरु कजो। हाणे हिन में असां वटि हिकिड़ा हुया साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स जेके आहिनि, ही स्केल्स मोस्टली सर्कुलर स्केल्स हूंदा आहिनि। ही बॉडीअ खे प्रोटेक्शन दे प्रोड्यूस प्रोटेक्शन टू द बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द फिशिस आर दिस एनिमल फ्रॉम द प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मीन्स उहे शयूं जेके हिननि खे खाई वञण वारा शिकारी। द फंक्शन ऑफ स्केल इज टू प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द प्रीडेटर्स, also from the parasites and the external injury to the body. The another one type is called fins. I have cut the fins of this fish because I have to use it for the cooking purpose, so that's why I have cut the fins of these fishes. These are the, see, there was pointed fins. हिते पॉइंटेड फिन्स हूंदियूं आहिनि जेके हिननि खे विच हेल्प इन द मूवमेंट टू द एनिमल। हिननि खे हलण में हिननि में हेल्प कंदियूं आहिनि। दीज आर पॉइंटेड स्पाइनी, these fins were spiny fins. These are called cycloid. These are ctenoid, these are cycloid scales. These scales, cycloid and ctenoid scales, are formed by the calcium. They contain calcium in their body. And the placoid scales, which I have told you about, the elasmobranchi placoid scales are found in the cartilaginous fishes. Another type is ganoid scales. Ganoid scales are of diamond shape. उहे diamond shapes जा हूंदा आहिनि। स्केल चाहे कहिड़ा बि हुजनि, उन्हनि जो कमु बॉडीअ खे सपोर्ट करणु, बॉडीअ खे प्रोटेक्शन ॾियणु। ही जस्ट प्रोटेक्शन जेके आहिनि से ॾींदा आहिनि। वॉट आर द स्केल्स? स्केल्स आर द small rigid plates. These are rigid plates which grow outside the body, outside the skin. This animal, fish is triploblastic animal. He triploblastic animal. A triploblastic animal means an animal which contain 3 layers of skin. Number 1, ही जेको मथियों हिस्सो, ही एक्टोडर्मा। हिन जो जेकॾहिं तव्हां खोले हिन जो ॾिसंदा त हिन जो अंदरियों विचों हिस्सो आहे जंहिंखे असां मीज़ोडर्म चवंदा आहियूं, अंदरें पासे ॾांहुं, ईअं ई एंडोडर्म। ही हिन जी एंडोडर्म आहे। एंडोडर्म मीन्स इनर लेयर ऑफ स्किन, जंहिंजे अंदरि विच कंटेन्स आर्टरीज एंड वेन्स। फिशेस, नाउ कम to the point. I am telling you about the scales of fishes. Different type of scales I have told you. These were cycloid scales, ctenoid, and these were cycloid. These are ctenoid scales. There must be ganoid scales too. And here this is the tail of this fish. हिते भी हिकु fin लॻल हूंदी आहे। There is also a fin which I have cut down. हिते भी fin हुई जंहिंखे मां cut down करे छॾियो। I have cut down that fish. हिन fin खे क्वाडल fin चइबो आहे। What we call it? It is जेका पुछ जी हिते हूंदी आहे fin लॻल खंभड़ाटी, उनखे असां क्वाडल fin चवंदा आहियूं। This is lateral line. हीअ lateral line आहे और क्वाडल line आहे। हीअ उहा लाइन आहे जेका हिन जी पुछ जी तरफ़ वेंदी, क्वाडल लाइन। हिन फिश जेका आहे, का बि जेका फिश आहे, उन्हनि ते चइनि क़िस्मनि जा फिन्स लॻल हूंदा आहिनि। हिनखे हीअं जेकॾहिं असां जोड़े छॾियूं त हिकिड़ी फिन हूंदी आहे, हीअ फिन, हितां वरी अॻियां वरी मथी फिन, हिनखे असां पेल्विक फिन चवंदा आहियूं। हिनखे छा चवंदा आहियूं? पेल्विक फिन। हुनखां पोइ हिकु हिते हेठि हूंदी आहे, हितां फिन हूंदी आहे, हिनखे असां स्पाइनी रे चवंदा आहियूं। हितां हिकिड़ी हीअ आहे, हितां पुछ खां हीअ हिनखे सॉफ्ट रे चइबो आहे। हिनखे छा चइबो? सॉफ्ट रे। हितां पुछ वारी फिन हूंदी आहे जंहिंखे असां क्वाडल फिन चवंदा आहियूं। ही फिशिस जे बारे में असां हिन जा हाणे अचूं था जेके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आहिनि या इंटरनल हिन जा कैरेक्टर्स। फिशिस जेके आहिनि, फिश इज़ एक्वेटिक एनिमल. इट इज़ फाउंड इन द वाटर. इट रेस्पायर थ्रू गिल्स. दिस opening is called opercula. What we call it? Operculum.
और operculum, यानी कि असां operculum चवंदा आहियूं। सी operculum covers the gills, operculum gills खे कवर कंदो आहे। हिन जे अंदरे पासे ॾांहुं हिते हिन जूं कलियूं हूंदियूं आहिनि। दिस इज़ अ फ्रीज़्ड फिश, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ओपन इट। हिन जे हिन हिसे खे operculum चइबो आहे। हिन जे हेठां फिन्स हूंदियूं आहिनि हिते, विच हेल्प इन द रेस्पायरेशन टू द फिश, हिन खे रेस्पायरेशन में हेल्प कंदियूं आहिनि। दिस इज़ द आई ऑफ फिश, this is eye of fish. It does not contain eyelids. Fish always keep its eyes open. This is the mouth. There are two types of fins, opercula. One is maxillar opercula and other one is mandibular opercula. This is mandible. This is mandible. Mandible. See this. हेठियों हिस्सो जेको वात जो, this is mandible. This is maxilla. ही मथियों हिस्सो जेको वात जो मथियों हिस्सो आहे, हिन खे मैक्ज़ीला चइबो आहे। दिस इज़ मैक्ज़ीलर बोन, दिस इज़ मैक्ज़ीलर बोन, दिस इज़ मैंडिब्यूलर बोन। दिस इज़ द टाइप ऑफ बोनी फिशेस। Fishes are triploblastic. They are poikilothermic, means cold-blooded animals. They lay eggs in the water. Also, these are their fertilization is external. It contains 3 layers of skin. Eyes are present. They do not contain eyelids. Tympanic membrane is present on the upper surface of eyes. They are insectivore. They eat insects. They contain kidneys. They also contain the digestive material. This is the mouth. They also contain teeth. हिननि में teeth भी मौजूद हूंदा आहिनि, but all teeth are homodont. सब दंद हिक जहिड़ा हूंदा आहिनि। They contain salivary glands too. These are salivary glands. ये हिन जा salivary glands आहिनि। It is all about the fishes which I have told you. I think तव्हांखे हला कंदो सम्झ में अची वियो हूंदो मुंहिंजो लेक्चर। If you have any difficulty, you may ask in the comments. Allah ji aman, Khuda Hafiz. See you in my next lecture.